My talk is going to be a really simple talk. Number one thing, कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ आप सिर्फ चुप करके आराम से इंजॉय करें, सुने. खाने की पीने की बात है, खाना पीना खा के आया तो चले कुछ ये भी हो जाएगा. दूसरा, your handouts are with you, okay? We will be using these handouts during the talk, so please make sure you have the handouts with you. And especially if you can turn to this page, we'll be using this probably first, जहाँ पे table बना हुआ है. ठीक है? Sorry. Next slide. Okay, so right away we're going to talk about malnutrition in children. And when we talk about malnutrition in children, we'll first talk about what is the definition of malnutrition in children. Okay? एक बात ज़हन में रखें कि जो malnutrition है ना, especially in children, कोई बच्चा इतना होता है, कोई बच्चा इतना होता है, कोई बच्चा इतना होता है, ठीक है? And at different ages there are different heights. And the most important thing to remember is the proportion, कि क्या उसकी height के मुताबिक उसका वज़न ठीक है? And that's what we call weight for height. ठीक है ना? क्योंकि some children may be stunted, किसी के वालिदैन बहुत लंबे हैं, किसी के वालिदैन छोटे हैं, उसी के हिसाब से बच्चों की हाइट, कोई बच्चा थोड़ा सा लंबा होता है, कोई बच्चा थोड़ा सा छोटा होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए. So let's talk about the definition. The definition for weight for height is less than 70% of the median. And वो मैं अभी आपको बताता हूँ. Or -3 standard deviations. शायद आपका एक लेक्चर पहले भी हुआ है जिसमें आपको ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है ना, और उसमें हाइट एंड वेट के बारे में उसका प्रोपोर्शनेट बताया हुआ है और मीडियन. I'm going to give you a much easier way to do this. Much easier, जो आप बड़े आराम से क्लिनिक में within a second कर सकते हैं. Second is edema of both feet. अगर बच्चों में edema होता है तो ये usually kidney failure या दूसरे वजूहात की से नहीं होता. It can be because of malnutrition. And the easiest way to identify malnutrition in children and the most effective is a mid-upper arm circumference. इसका मतलब ये है कि आप measuring tape लें, ये mid-upper arm है, ठीक है, और इसको measure कर लें, ठीक है, and it should be less than 110 millimeters. If it's less than 110 millimeters, जो 11 centimeters है, in children between 6 months and 59 months, यानी 6 माह से 5 साल की उम्र के दरमियान, अगर ये जो mid upper arm circumference है, if it is less than 11 centimeters, that's malnourishment. ठीक है? Next slide. This is to point out कि इतना फ़र्क है, 6 माह का बच्चा कितना छोटा होता है और 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, तो मेरा आर्म अपर सर्कमफरेंस इतना चेंज नहीं होना चाहिए. उन्होंने एक ही वैल्यू क्यों रखी है? And this actually helps you understand it. This is the mid upper arm circumference. This is the age in months. 10 months, 20 months, 30, 40, 50 and 60. This is -3 standard deviations जिसको हम लेबल कर रहे हैं severe malnutrition. You can see this is a relatively steady line. इतना ज़्यादा change नहीं हो रहा. And this is approximately 110 centimeters. So the change is not that much over the years in the arm. But it is between 6 months and 6 years. 5 years. Next slide. Now this is where I'm going to use this paper, so please take this out. Aslam, a 2-year-old male who weighs 7.9 kilograms and has a height of 80 centimeters. Is he severely malnourished? अब इसका तरीका ये है, ये आपके पास टेबल है, ठीक है, जो डार्केस्ट मिडल में आपको नज़र आ रहा होगा उसमें लिखा होगा लेंथ, ठीक है, ओके, जो डार्केस्ट ब्लैक में है वो लेंथ है. नाउ लुक, फाइंड 80 सेंटीमीटर्स, ठीक है.
ओके 80 सेंटीमीटर्स पे -3 स्टैंडर्ड डिविएशंस पे वेट कितना है? -3 स्टैंडर्ड डिविएशंस 8.3, ठीक है? And you notice that one side it's boys and the other side it's girls, ठीक है ना? So, do you think he is severely malnourished, Aslam? Yes. Okay. Easiest way to identify children with severe malnutrition. Weight कम है, severely malnourished है, and it's -3 standard deviations. ठीक है? These are WHO issued guidelines. Very easy to use. Anyone, does anyone confused? Everyone's following me? Okay. Click करें. So at a length of 80 centimeters, the median weight for boys is 10.9. होना चाहिए इसको तकरीबन 11 किलो के करीब. है ये बेचारा तकरीबन 8 किलो. Whereas -3 standard deviations for weight is 8.3 kilograms. Next slide. Now, as a general practitioner, what is the first step for you to do? और वही बात आती है history. ठीक है ना? So what questions would you like to ask in history? Number 1 is recent intake of food and fluids. ये कितना खाता है? आजकल कितना खा रहा है? Usual diet before the current illness. The reason why it says before the current illness is that usually children who are malnourished are very prone to other infections. उनको साथ निमोनिया भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, जो अभी हुआ है. तो उससे पहले आपने पता करना है कि उसका यूजुअल डाइट क्या है. ब्रेस्ट फीडिंग, नॉट ओनली कि जी ये ब्रेस्ट फेड है कि नहीं है, अगर नहीं अब ये 2 साल का है, ये 3 साल का है, तो हाउ लॉन्ग वाज ही ब्रेस्ट फेड फॉर? क्या उसको माँ ने बिल्कुल ही नहीं पिलाया है, कौन सा कितनी देर पिलाया है, ठीक है? और वीनिंग फूड्स कब इंट्रोड्यूस किए हैं? द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया एंड वॉमिटिंग, the type of diarrhea, whether it's bloody or watery, loss of appetite, family circumstances, very important from a family physician point of view. अगर घर में ही 10-11 बच्चे हैं तो that's an important social factor, ठीक है ना? वालिद काम नहीं करता. Yeah, we have a lot of cases, even we see in Lahore, कि जी the parents are addicts. ठीक है? मदर बेचारी काम करती है, so there's no one at home to look after the kids. Chronic cough, his contact history of tuberculosis, both indicating tuberculosis. ठीक है? Recent contact with measles and a known or suspected case of HIV. And the reason why I deliberately put this in over here is, एक तो आपके MRCGP क्योंकि साउथ एशिया के लिए, साउथ एशिया में HIV डेफिनेटली है, इंडिया में काफ़ी हद तक है, दूसरे श्रीलंका में भी काफ़ी हद तक है, और पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है. एंड दैट्स व्हाई knowing about it is extremely important. ठीक है? What are the signs which can be help you suspect कि हाँ जी ये शायद HIV है? Recurrent infections, diarrhea which does not resolve after 14 days, candidiasis, oral thrush जिसे हम कहते हैं, जो ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होते, and other such signs. ठीक है? That can be a suspected HIV. Next slide please. Right now we're talking about a history. We're taking a history of the child. So when you talk about a history of the child, you want to know whether there is any contact with tuberculosis. Contact means, is there anyone else in the family who has tuberculosis? Especially elders. ठीक है? अक्सर ये होता है कि जी दादी अम्मी है, दादा अबू थे, वो उनको पुरानी खांसी है, हाँ जी टीबी की ट्रीटमेंट ली है. ये हमारे जो सोशल सेटअप है उसमें खाली एक ख़ानदान नहीं होता, कभी कभी 2-3 ख़ानदान होते हैं एक ही फैमिली में और एक ही घर में जो रहते हैं. तो is there anyone like that? And जहाँ तक suspected HIV, remember HIV can go into a latent phase. You may not be able to detect HIV for a long period of time. So you may suspect
with the signs whether this child is HIV infected. Late stages में तो AIDS हो गई, ठीक है ना? So on examination, what are the important things you should look for? Signs of dehydration or shock, और वो कौन से signs हैं हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा. Severe pallor, ठीक है, वो या conjunctiva के नीचे होगा या palms में होगा या जुबान के नीचे होगा, जहाँ पे भी है उसको भी आपने देखना है. Eye signs of vitamin A deficiency, ठीक है. Any of these signs can be vitamin A deficiency. Dry conjunctiva, Bitot spots, corneal ulcerations, or keratomalacia. Localizing signs of infections, क्योंकि again malnutrition कभी अकेला नहीं होता, कोई ना कोई साथ कोई चीज़ अक्सर होती है. So that infection, whether it's from the ear, the throat, the skin, or the lungs, and then what we just talked about, the signs of possible HIV infections. Next slide. So these are Bitot spots. ठीक है ना, ये foamy Bitot spots हैं, and it's usually on the temporal side of the eye. ये भी Bitot spots हैं, and ये dryness आपको नज़र आ रही है, बड़ी dry किस्म की surface है, and that's conjunctival xerosis. And these are all signs of vitamin A deficiency, which are also present in children who are severely malnourished. ठीक है? Next slide. Again, on examination, you can have a fever. The child can also be hypothermic. और आगे हम बात करेंगे कि even during infections, these children who are malnourished may also be hypothermic. Mouth ulcerations, kwashiorkor में hypo and hyperpigmentation भी आती है. Desquamation because of zinc deficiency. Ulcerations, exudative lesions, again also because of zinc deficiency, which may actually look like burns. ये ना बिल्कुल skin उतर गई है. And secondary infections like candidiasis. अब एक बात ज़हन में रखने वाली है, ये जो हम कह रहे हैं kwashiorkor और marasmus, और फिर एक होता है marasmic kwashiorkor. Remember one thing, all of these terms are going out of fashion because usually not ये अक्सर साथ ही मिले होते हैं. And now the term which is coming in is protein energy malnutrition, or PEM, and that's the more commonly used term. But still important to remember, in some certain diseases you may see kwashiorkor by itself, just a nephrotic syndrome, or protein losing enteropathies in. उनमें शायद आप kwashiorkor अकेला दे सकते हैं. Marasmus is usually marasmic kwashiorkor. ठीक है? Next slide. Now, most important is the treatment plan. There are 10 things which you want to treat while you're treating malnutrition. Very basic, very simple. एक तो hypoglycemia, अगर खाना ही नहीं खाएगा तो hypoglycemic तो होना ही है उसने. Hypothermia, dehydration, electrolyte abnormalities, infections, micronutrients जैसे zinc, copper, etc. ठीक है? Initiating a feeding, कि कैसे दोबारा उसको खाने पे लेके आना है. Catch up growth, sensory stimulation, and preparing them for home follow up. और घर पर ये जब चले भी जाते हैं तो उनका follow up कैसे करना है. Before we start with hypoglycemia, कितनी population South Asia में रहती है पूरी दुनिया की? Any guess? Right, 1/4 of the total world's population lives in South Asia. Now, let me take that a step forward. How many children in the world are malnourished? Any guess? Millions, percentage-wise. A good, almost about 50%. And you'll see the majority of deaths which occur in the world are because of malnutrition. And that's how important it is.
although maybe in your daily practice, I don't know whether you do or do not see a lot of malnutrition. हम गंगाराम में हैं, यकीन करें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं malnutrition, और and I mean third degree malnutrition, severe malnutrition. We see a lot of cases, so it's something to keep in mind. जी पता क्या, मगर ये बात हमेशा ज़हन में रखें, हमारे पास जो आते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं कि कहीं गांव से या कहीं दूसरे शहरों से तो चल के आ गए हैं हमारे पास, पता नहीं कितने तो वहीं पे उनकी डेथ हो चुकी है या पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेता हूँ। अगर हमारे पास इतने नज़र आ रहे हैं एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल में, तो फिर पता नहीं कितने बेचारे मिस हो जाते हैं। ठीक है, okay, so when we see a child with malnutrition, severe malnutrition, there's a couple of things you want to do. Consider, automatically assume that all children with malnutrition are hypoglycemic. ठीक है, जैसे आपके पास आए वो most likely hypoglycemic होगा। Definition क्या है hypoglycemia का? Less than 3 millimoles per liter or less than 54 milligrams per deciliter in children. ठीक है, these are for children. Sorry? Random blood sugar. On क्योंकि फास्टिंग तो हमने करनी नहीं है इनकी, हम यही ऑटोमेटिकली assume है बेचारे फास्टिंग से भी बुरी हालत उनकी होगी। On admission they should be given a feed. ठीक है, if it's breast milk, if they're small enough that वो अभी breast feeding कर रहे हैं, उनको breast पे लगाएं। अगर breast feeding नहीं कर रहे, they're taking something else, give them a feed. ठीक है, or give them 10% glucose orally. The most important part of this is orally. मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें गट दिया है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारा कुछ दिया है, तो उसको हमें इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर जो malnourished children है ना, जितनी जल्दी आप उसको इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी ये ठीक होंगे। तो अगर IVs वगैरह इन चीज़ों पे लगे रहेंगे तो गट तो बेचारा वैसे ही पड़ा रहेगा, and we don't use it. So most important point in this is that you should be given orally. Easy solution. No, you should automatically assume that all children who come to you who are in third degree malnutrition or severe malnutrition are hypoglycemic. Guess करने की ज़रूरत नहीं है, taken like this. ठीक है, simple thing you can do, 50 ml of 10% glucose. अगर 10% ग्लूकोज नहीं है तो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून में कितने ml होते हैं? 5 ml। 1 टेबल स्पून में कितने ml होते हैं? 15। ठीक है तो 15 ml होते हैं। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली ये वही चीज़ बन जाती है। इफ़ यू टेक 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड यू पुट इट इन 3.5 टेबल स्पून्स ऑफ वाटर, वो तकरीबन वही 50 ml का बन जाता है 10% सोल्यूशन। ठीक है, एंड यू वांट टू गिव दैट orally, और इफ़ दे कैन नॉट टेक इट orally, NG ट्यूब आप पास करें, उसको NG ट्यूब के ज़रिए से दें। वही बात है कि गट को इस्तेमाल करें। डिवाइड, अगर फीड देनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसकी फीड जो है आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर देनी है। ठीक है, और हर आधे घंटे बाद इसको वो 1/4 हिस्सा दे देना है। ठीक है, सो इफ़ ही टेक्स अ नॉर्मल फीड एवरी 2 आवर्स, ऑटोमेटिकली इसको 2 घंटे में फीड मिल जाता है। 1 आउंस में कितने ml होते हैं? 30 ml। अक्सर हम माओं को बताते हैं, ख़ासतौर पर जब रिहाइड्रेट कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं जी बीबी अगर आप 1 चम्मच बच्चे को हर 10 मिनट बाद पिला दें ना तो कुछ भी नहीं होता। 1 चम्मच बच्चे को 10 मिनट बाद आप मुंह में डाल लें तो 1 घंटे बाद इसने 1 आउंस पी लिया। बात वहीं पे आ जाती है, स्मॉल अमाउंट्स मोर फ्रीक्वेंटली और लार्ज अमाउंट ऑल एट वंस, बात वही बोल रही है। नहीं ज़रा पीछे। सॉरी, न्यू पार्क क्या है? अच्छा, न्यू बॉर्न्स में, अच्छा न्यू बॉर्न्स में जो 10% ग्लूकोज आफ्टर बर्थ बिल्कुल नहीं रेकमेंड करते। ठीक है, एंड देयर इज अ रीज़न। नंबर 1 रीज़न इज़ न्यू बॉर्न्स शुड गेट ब्रेस्ट मिल्क।
Number 2 reason is that if you give a 10% glucose, क्या होता है, इंसुलिन का सर्ज आता है. इंसुलिन का जब सर्ज आता है ना तो वो बहुत जल्दी मेटाबलाइज होकर वो गिर जाता है. कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तो है नहीं उसमें, जिसकी वजह से वो यू हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ दैट न्यू बॉर्न बिकमिंग हाइपोग्लाइसीमिक. तो इट इज़ स्टिल बेटर कि अगर वो आधा आउंस भी पी लेना न्यू बॉर्न इनिशियली, मोर देन इनफ. ठीक है, ओके. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू वांट टू फीड एवरी 2 hours फॉर द फर्स्ट डे. हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ देते रहना है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. अगेन हाइपोथर्मिया, ये आपने चेक करना है कि ये बच्चा हाइपोथर्मिक है कि नहीं है. बट दे आर यूजुअली एट अ वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया. Hypothermia is a temperature of less than 35 degrees centigrade or 95 degrees Fahrenheit. Important thing, feed the child immediately. बुखार जब होता है तो कांपना को शुरू करते हैं to get rid of that energy. ठीक है ना. तो होता ये है मसला, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कांपे या कुछ करें. They don't have enough subcutaneous fat to even keep themselves warm. ठीक है ना. That's why malnourished children are at a high risk of hypothermia. Cover with the warm blankets, especially the head. माय नहीं आती आपके पास, कहते हैं डॉक्टर साहब बुखार चढ़िया सी, सर बड़ा गर्म हो गया. The reason is that children lose the most amount of heat from their head. If you look at the ratio between the body surface and the head, हमेशा बच्चे का सर थोड़ा सा बड़ा लगता है. ठीक है. दूसरा हमारे तो बाल हैं, बच्चों का वो इंसुलेटिंग लेयर नहीं है बालों की और एयर की. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई दे लूज अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम द हेड. तो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हु बिकम हाइपोथर्मिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट उनको टोपियाँ पहनाई जाएँ या कवर देयर हेड. सर ढांपना बहुत ज़रूरी है. प्लेस अ हीटर नियर बाय, नॉट डायरेक्टली एट द चाइल्ड. हमने देखे हैं, यकीन करें सर्दियाँ आती है, हमने देखे हैं कि बच्चा लेटा हुआ था, हीटर एक साइड पे था, वो साइड सारी जल चुकी है. ठीक है. इनएडवर्टेंटली वो जान के नहीं करते, मतलब दे डोंट नो बेटर. एंड ओनली यूज हॉट वाटर्स टू वार्म द ब्लैंकेट्स और क्लोथिंग. अगेन वो डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाना. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. हाउ डू यू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया? हर 2 घंटे बाद उसको कुछ खाने के लिए दें. Always give feeds throughout the night. अक्सर ये होता है, इवन हमारे नियोनेटल यूनिट में, हमारे वार्ड में और न्यूट्रिशनल यूनिट में यही होता है कि रात को कोई दूध नहीं पिलाता बच्चों को. ठीक है. Unfortunately these children, they have very low energy resources and stores. They require feeds during the night as well, especially every 2 hours. Keep the child covered. Change wet nappies and clothes and bedding. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इवन जब हम नियोनेटल रिससिटेशन करते हैं तो उसका भी एक हिस्सा है कि जब आप ड्राई द बेबी, ठीक है, और फिर वो वेट चादर निकालें, दूसरी ड्राई चादर डालें, वो बेशक गर्म हो या ना हो. ठीक है ना, ताकि हीट लॉस कम से कम. एंड लेट द चाइल्ड स्लीप विद द मदर टू कीप वार्म. ठीक है. लेट द बेबी स्लीप विद द मदर. ज़रूरी नहीं आप उसको सेपरेट करें. नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन. अगेन दोबारा ये सारे WHO के recommendations हैं. These are not any other textbooks. These are what will be asked by you and what will be expected by you. ठीक है. Do not use the IV route except in cases of shock to treat dehydration, especially in children with malnutrition. Especially in children with malnutrition. IV route comes unless कि ये शॉक में है बच्चा, IV route आपने इस्तेमाल करना है, गट इस्तेमाल करनी है. ठीक है जी. Avoid ORS in malnourished children. ठीक है. उसकी वजह अभी मैं बताता हूँ. एंड वजह ये आगे लिखी हुई है. ORS has a high sodium amount and a low potassium. पोटेशियम उसमें ना होने के बराबर होती है. ठीक है ना. सोडियम काफ़ी होता है उसमें. And what the problem is, in malnourished children, they already have a lot of sodium. They are potassium deficient. And even if you give ORS, you can actually kill a child with severe malnutrition. And that is why the WHO actually recommends a special rehydration solution.
That's a rehydration solution for malnourished children. उन्होंने क्या किया? Rehydration solution, malnutrition, Resomol. Solution का नाम ही Resomol रख लिया, ठीक है? Resomol, rehydration solution for malnutrition. And all it is 2 liters of water. ORS किस तरह बनाते हैं? 1 लीटर में 1 पैकेट डालते हैं, ठीक है? इसमें उन्होंने क्या रेकमेंड किया है? 2 लीटर में आपने 1 पैकेट डालना है malnourished children के लिए. चीनी, सुक्रोज 40 ग्राम्स और 1 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. और वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या है? एक्स्ट्रा KCl. ऑल इट इज एक्स्ट्रा पोटेशियम और कुछ भी नहीं है. यानी हमने इसका जो रीहाइड्रेशन सोल्यूशन है उसमें सोडियम की क्वांटिटी को डाइल्यूट कर दिया और पोटेशियम ज़्यादा कर दिया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इट सेज इज अगेन गिव Resomol. ये सारा कुछ आपने लिखा हुआ है इसलिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मौजूद है. गिव Resomol 5 ml per kilogram every 30 minutes for 2 hours. For the first 2 hours. ये थोड़ा सा मिस्टेक आ गई. For the first 2 hours, and then 5 to 10 ml per kilogram per hour for the next 4 to 10 hours. बेसिक मकसद इसका समझने का ये है कि इनिशियली आपने थोड़ा सा ज़्यादा फ्लूइड देना है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी. लेट्स सपोज अगर जैसे असलम था हमारा 8 kg का बच्चा था, तो इसका मतलब अगर 5 ml के उसने हमने सिर्फ 40 ml देना है, ठीक है ना? पहले 2 घंटे में, ठीक है ना? 40 ml every 30 minutes for the first 2 hours. Slowly rehydrate करना है. And if this child is still dehydrated, then use F75. तीन चीज़ें आप सुनेंगे मेरे लेक्चर में, which are probably very new, and the reason why I'm stressing it is, even though ये पाकिस्तान में available नहीं है, आपकी awareness बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है? एक है Resomol, एक है F75 which is feeding. F stands for feeding, and 75 which is the amount of calories, and F100, ठीक है? ये 3 चीज़ें, और एंड में टेबल भी बनी हुई है ताकि एक आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इसमें होता क्या है. मगर just remember these things. F75 is a feeding formula for children who are severely malnourished. और इसमें ये ज़हन में याद रखने वाला है कि जो बच्चे आप फ्लूइड्स देते रहते हैं ना, नॉर्मल गाइडलाइंस ये है, अगर फ्लूइड्स आप दे रहे हैं और बच्चा रिहाइड्रेट नहीं हो रहा तो आप ब्लड लगा दें, ठीक है? ताकि उसमें प्रोटीन्स थोड़े से रहें और इट कैन मेंटेन इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, ठीक है ना? इसमें भी बात वही है, आपको थोड़े से कैलोरीज मिल रहे हैं, आप थोड़ा सा ऐसा फ्लूइड दे रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन की क्वांटिटी हो, विच विल एक्चुअली हेल्प द चाइल्ड, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड. When you monitor dehydration, watch for tears. अक्सर dehydrated children do not have tears. वो रोते हैं मगर आंसू नहीं आते. Moist mouth, जो dehydrated होते हैं उनके मुंह सूखे होते हैं. So as you're rehydrating them, ठीक है, आपने इन चीज़ों को देखना है. Less synchronized, the synchronized will get better. The fontanelle will not be depressed. ठीक है? द स्किन टर्गर, जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बेहतर हो जाएगी. बट द प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ वाई यू डोंट यूज़ एन IV route in severely malnourished children, उनका हार्ट इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता. वो कहते हैं अगर कोई भूखा है आप उसके सामने इतनी बड़े ज़बरदस्त खाने रख दें, दिल तो उसका बड़ा करेगा, खा नहीं पाएगा, ठीक है ना? वो टॉलरेट ही नहीं कर सकता, या वो खा लेगा तो बस अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना? बात यही है. इवन विद चिल्ड्रन, देयर हार्ट कैन नॉट टॉलरेट सच अ लोड, ठीक है ना? एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू वॉच फॉर ओवर हाइड्रेशन. एंड द साइंस ऑफ ओवर हाइड्रेशन विल बी इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल एंड वॉमिटिंग. यूरिनरी फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका हार्ट उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और आपका यूरिन आउटपुट जहाँ तक बेहतर होना चाहिए था वो अब कम होना शुरू हो जाएगा,
ठीक है ना? And the vomiting and may get worse, and your stools will actually may get worse. Less. ठीक है ना? क्योंकि perfusion ही इतनी नहीं हो रही. Next slide. Electrolytes. वापस उसी बात पे, malnourished children have a deficiency of potassium and magnesium. ठीक है, इन दो चीज़ों की, इसलिए वो बड़े कमज़ोर भी होते हैं. The edema in malnourished children not only may be because of lack of protein, but also may be because of a lack of these two elements, potassium and magnesium. और इसलिए don't treat it with diuretics. ये ज़हन में रखना है, अगर बच्चा एडिमेटस आपके पास आए उसको डायरेटिक नहीं देनी. एंड अगेन वही बात जो मैंने पहले स्ट्रेस किया था, एक्सेस बॉडी सोडियम ऑल्सो एग्जिस्ट्स, इवन दो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स उसके करवाएंगे तो उसका 130 के करीब उसका सोडियम लेवल आएगा. ठीक है, मगर हिज बॉडी सोडियम विल बी हाई. नेक्स्ट स्लाइड. ट्रीटिंग इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज. नॉर्मल पोटेशियम हमें कितना चाहिए होता है? एनी गेस? सॉरी, यूजुअली 1 to 2 milli equivalents or millimoles per kilogram. ठीक है ना? तो इन बच्चों को 3 to 4 चाहिए ज़्यादा. सोडियम हमें कितना चाहिए होता है? यूजुअली 3 to 4 milli equivalents. ठीक है, यूजुअली वी नीड 3 or 4 milli equivalents per kilogram. इनमें बहुत कम चाहिए होता है क्योंकि they are all already sodium loaded. And again, prepare their foods without adding salt. सोडियम इनको ज़्यादा नहीं देना. Give extra sodium. नहीं, this is 0.4. Extra sodium means कि बिल्कुल आपने सोडियम बंद नहीं करना, मगर जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है ना उससे भी कम देना है आपने. इसलिए तो वो कह रहे हैं आगे कि प्रिपेयर फूड्स विदाउट एडिंग एनी सॉल्ट. पहले तो वो ले ही कुछ नहीं रहा. ही इज अ सिवियरली malnourished child. The point to keep in mind is that the child should not be given a lot of sodium. ठीक है? That's the main point, that the child should not be given a lot of sodium. Next slide. Again, now with infections. Fever may be absent during infections in children with malnutrition. Any child who has malnutrition should be automatically be assumed, ये भी एक और assumption है, should automatically be assumed to have infection. अगर malnutrition है तो कोई ना कोई infection साथ होगी इसकी. ठीक है? So what you want to do is give a broad spectrum antibiotic and to give the measles vaccine. The child should be over 6 months of age. You cannot give the measles vaccine under 6 months of age. If the child is over 6 months of age, irrespective of the age of the child, give the measles vaccine. What about other vaccines like pneumococcal vaccine? No, not yet. ठीक है? The reason why the WHO stresses the measles vaccine is that it is the WHO does not recommend the pneumococcal vaccine. First of all, let me make sure this is clear. No, there is no contraindication, but the uptake of the measles vaccine may not, the uptake of the pneumococcal vaccine may not be good. ठीक है ना? उसकी dosages और सारा कुछ थोड़ा सा change हो जाता है, dosage ranges थोड़ा सा change हो जाता है. जी जी, MMR क्यों नहीं देते? ये आपका सवाल. Again, the WHO, क्योंकि my job is to teach you, मेरे हिसाब से I would give the MMR. ठीक है? If it was me, I would give the MMR. But the WHO recommendation is measles. Just to give the measles. And the reason why they stress about measles is there's a very high mortality, very high morbidity and mortality with malnutrition and measles. ठीक है? Okay. Next slide. If the child appears to have no complications, ठीक है, then you still want to use this.
Or if the child has hypoglycemia, hypothermia, is sick and lethargic, then you still want to use this. दोनों सूरतों में ठीक है आपने ये इस्तेमाल करना है. Number 1, simple antibiotics: ampicillin, amoxicillin, and gentamicin. ठीक है. Ampicillin, initially 2 days of IV ampicillin. The rest of the days you can use amoxicillin oral or ampicillin. ठीक है. And then gentamicin. This you're going to give IM or IV for 7 days. Solute overload. It is a nephrotoxic drug, but not in these doses and not for that period of time. Remember, it's a nephrotoxic, it's an autotoxic drug, but not for this amount of time and not in these doses. Okay? And actually, interesting for you all to know that even in neonates, the recommended, अगर कोई sepsis के साथ आपका neonate आता है ना, newborn, premature child, premature newborn, the recommended is ampicillin and gentamicin. We still use ampicillin and gentamicin even in those children. ठीक है? If the child does not improve, then still the recommended is chloramphenicol for 5 days. ठीक है. I'm surprised कोई इसमें नहीं बोला कि chloramphenicol. Thank you. इस चीज़ का इंतज़ार करना. जी. Okay. How many cases of aplastic anemia have been seen with chloramphenicol? I have seen. You've seen one? Okay. But there's very, very few. That's the number one thing. Second thing, it's a very cheap medication available everywhere. Third thing is because it has not been used for so long, कोई resistant pattern ही नहीं है. Just आपको पता है even nowadays जो हम salmonella ये जो enteric fever को treat करते हैं, ठीक है, जो and this is I'm talking about clinical practice. Enteric fever which does not respond with third generation cephalosporin, does not respond with ciprofloxacin, does not respond with all our other fancy medications. Chloramphenicol को respond बड़ी अच्छी तरीके से कर जाता है. मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा ये तो अक्लमंद है. Unfortunately it's the wrong trend. जी जी जी. The reason why I'm comparing it is because बिल्कुल आपकी बात है. Protein energy malnutrition है वो usually gets access around 5 to 6 months के बाद जाके बिल्कुल ठीक और मतलब अक्सर हालात में ये जो हमारे सवाल है हमारे से इंजेक्शन जो कि प्राइमरी लेने वाले हैं पाकिस्तान के Phenicol is still recommended by the WHO for treating it. Next slide. To treat parasitic worms, all children should be treated with parasitic worms because of the fact that most of them have iron deficiency anemia, and parasitic worms can actually worsen your iron deficiency anemia. Treat giardia, especially if suspected. You suspect giardia with prolonged diarrhea, which does not get better, and that's where you want to treat giardia. Obviously, if there's any associated history of chronic cough or contact with tuberculosis, you may want to treat tuberculosis and treat malaria. Next slide. With your micronutrient deficiencies, you want to give a multivitamin supplement. Folic acid is very important again with these children because they're folic acid deficient. Zinc easily available होना शुरू हो गया हमारे मुल्क में, and zinc is extremely important especially for the dermatosis, जो kwashiorkor में dermatosis होती है उसके लिए.
copper deficiencies are there. And once the child is gaining weight, this is very important. You don't want to add iron until the child has started to gain weight. Okay? Once the child has started to gain weight, then you can add iron. And vitamin A orally on day 1, aage day 2, and day 14. You want to give these doses. Less than 6 months, 50,000, 6 to 12 months, 100,000, and then older children, 200,000 international units. Next slide. Again, only give iron once the child has started to gain weight. Next slide. Now, in your initial refeeding process, you want to start refeeding as soon as possible. The initial feeds should be frequent small feeds which are low in lactose and low osmolality. The easiest and simplest low lactose formula is dahi, yogurt. Okay? And many times these children do very well with yogurt. You want to give oil feeds and or nasogastric feeds. Again, never try to give IV feeds. You want to give calories, about 100 kilocalories per kilogram per day, and I'll show you how to calculate calories when we go over nutritional counseling. Protein should be in the quantity of 1 to 1.5 grams per kilogram per day. Liquids should be about 130 ml per kilogram per day, or about 100 ml per kilogram per day if the child has edema, because of the risk of congestive heart failure. Wohi baat dobara aa jati hai. Next slide. Again, this table is just for you to know what are in these formulas. Remember, मैंने कहा रिसोमाल एक आपके ज़हन में आया, F75 जो cereal based है, और normal starter formula है, and F100. It's based on the calorie quantity per 100 ml. F75 इसलिए कहते हैं कि 75 calories per 100 ml. Again, F100 इसलिए कहते हैं it has 100 calories per 100 ml. All it is a simple way to make it is cow's milk, sugar, cereal, vegetable oil, electrolyte solution, वही जो potassium, extra potassium के लिए, and water. That's it. और इसकी different quantities हैं. ठीक है? ये कोई याद करने वाली बात नहीं है. Just for your information. Next slide. Monitoring the feeding. You want to know. You want to offer. You want to note how much feed was offered. कि बच्चे को कितना दिया और कितना उसने छोड़ दिया. Vomiting हो रही है कि नहीं हो रही. Stool की frequency and consistency. Daily body weight. A good weight gain is greater than about 10 to 15 grams per day. ठीक है? That's a good weight gain. 10 to 15 grams per day. A moderate weight gain is about 10, and poor weight gain is about 5 grams per day. During the initial phase, diarrhea should get better, and the children should lose weight. That's the important thing, especially with edema. The children will lose weight initially, and then their weight will improve. Next slide. In your catch-up growth, your appetite will usually return within 1 week of intervention. You want to try to have a good weight gain of 10 grams per kilogram per day. 10 grams per day. This shouldn't be kilogram. However, be alert for heart failure, because if the heart failure comes, then the children, that usually occurs when the children consume large amounts very, very quickly. Next slide. Again, increase the successive feeds by 10 ml until some is left. Usually total amount of feed वो बच्चा full feeds उस वक्त लेता है जब approximately 200 ml per kilogram per day. The frequent feeding, you want to give frequent feeds and unlimited amounts. जितना बच्चा लेता है उतना ठीक है. Which approximately gives you 150 kilocalories per kilogram per day, 150 to 220, and 4 to 6 grams of protein. And अगर आप वो formulas इस्तेमाल करते हैं ना, इतने calculations करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर वो formulas इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि it has a standardized amount of proteins and amount of fluid and osmolality. Especially if the child is breastfed, then the breastfeeding should continue, and then to give additional feeds. Important to monitor for heart failure. If the pulse and breathing increases by 5 breaths per minute,
or by 25 breaths per minute for 8 hours, then you want to reduce the feed. मेन बात ये ज़हन में रखने वाली है, जब आप फीड ऐसे करते हैं ना, तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा फीड ले रहा है तो आपने उसकी फीड थोड़ी सी कम करनी है. पता कैसे लगेगा? इसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा. वही ओवर हाइड्रेशन की बात वहीं वापस आ जाती है कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, और ये लिमिट्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट स्लाइड. Very important, severe malnutrition usually results in developmental delays as well. ठीक है ना, वो developmentally deprived children होते हैं, and that's why they need some sensory stimulation. They need care. They need a cheerful, happy environment, ठीक है ना, which they stimulate them. They need to have structured play therapy. What is structured play therapy? कोई उनके साथ खेले, कोई गेम 15-20 मिनट के लिए रोज़ाना कोई उनके साथ खेले, उसको बस छोड़ ना दें. फिज़िकल एक्टिविटी as soon as the child is well enough बाहर लेके जाएं, ताज़ी हवा में लेके जाएं, ठीक है. एंड मैटरनल इन्वॉल्वमेंट, माँ को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए. Preparation for follow-up. When the child is 90% of the median weight, then he is considered to be recovered. इस वक्त आप बूस्टर इम्यूनाइजेशंस बाकी दे देते हैं. When he weighs about this much, उस वक्त आप सिर्फ मीजल्स की वैक्सीन दे रहे हैं. इस वक्त आप बाकी जो बूस्टर इम्यूनाइजेशंस वो दे रहे हैं. The child should get 6 monthly vitamin A until for about another year, and modifications at home. And this we'll also talk about in our nutritional counseling part. But the feed should be at least 5 times a day. High energy snacks, milk, banana, biscuits, bread. Encourage the child to finish each meal and breastfeed as often as the child wants. Now, the associated problems जो इनके साथ malnutrition के साथ आते हैं. Vitamin A deficiency, ये हमने बात कर ली है पहले. If there's signs of inflammation or ulceration, again chloramphenicol or tetracycline eye drops. Atropine eye drops, which will help relieve the pain in the eye. You want to give 1 drop TDS for 3 to 5 days. Cover the eye with soaked saline eye pads and bandage the eye. Next. Again, agar severe anemia, you should transfuse blood if the hemoglobin is less than 4 grams per deciliter and not symptomatic. But if the child is symptomatic, at any period you can transfuse blood. And ideally give packed cells, not whole blood. In any case, you should always try to give packed cells and not whole blood, because it can worsen the heart failure. Next slide. Again, your dermatosis at kwashiorkor ke saath, once you usually replace the zinc, it dramatically improves, क्योंकि ये usually zinc deficiency की वजह से है. Bathe the area 10 minutes a day with 1% potassium permanganate. That is usually a good antiseptic which is used for it. Apply the barrier cream to raw areas. Again, zinc और किसी भी तेल के साथ आप मिला के लगा सकते हैं, या खाली पेट्रोलियम जेली भी आप लगा सकते हैं. So that helps keep it moisturized and protected. And nappies कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि डाइपर्स, मैं तो कहूँगा डाइपर्स भी कम से कम इस्तेमाल करें, because it keeps the irritant on the surface of the skin. Again, continuing diarrhea अगर हो, there's main 3 reasons: giardia, lactose intolerance, and osmotic diarrhea. Giardia की हमने पहले बात की है. You can treat it with metronidazole for 7 days. Lactose intolerance, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, yogurt या lactose free milk. And then आहिस्ता दूध दोबारा introduce करें, because one thing which a lot of people do wrong is they start on a lactose free milk and never try to reintroduce milk. और फिर माँ अक्सर ये कहते हैं जब भी वापस आते आम दूध पे आते कि डायरिया दोबारा शुरू हो गया. But you have to slowly reintroduce milk. And osmotic diarrhea, if the feeds you're using have a lot of sugar in it, they will cause osmotic diarrhea. And the best way to take care of this is add more complex starches. Okay, this use of more starches will help. If the child is suspected to have tuberculosis, you can do it by a Mantoux test and a chest X-ray, and then you should treat the tuberculosis. That was my main talk about severe malnutrition. ठीक है? तो चाय तो आप साथ साथ पी रहे हैं, तो hopefully ये अब आपकी हालत हो जाएगी.
Next slide. Just I thought a little break. A sure sign that your doctor spends too much time online. You've got mail. Email जब आते हैं, you've got mail. ठीक है? Okay. Next part, almost finished. Okay, I'll probably take another maximum 10 minutes or so. What is IMCI? Okay. पहले तो ये प्रोग्राम्स होते थे जी, ARI का प्रोग्राम है, Acute Respiratory Tract Infections का प्रोग्राम है. फिर ये था कि जी Control of Diarrheal Diseases का प्रोग्राम चला था. ठीक है. What now the whole world is shifting to is an integrated management, which is IMCI. All it stands for is Integrated Management of Childhood Illnesses. उसकी वजह ये उन्होंने कहा है कि usually if a child has malnutrition, he has measles associated with it. If he has diarrhea, he probably also has malnutrition. If he has measles, he probably also has pneumonia. So all of these illnesses are not separate individual entities. They're usually a combination, and that's why they use the word integrated management. क्योंकि आपने एक चीज़ को target नहीं करना है, आपने इन सब चीज़ों को target करना है. Next slide. The IMCI is actually a joint initiative of the WHO and the UNICEF. Okay, UNICEF और WHO का है, and it's a branch of their child and adolescent health and development. और ये इसका website है, आपके पास वैसे भी handout में है. Next slide. It focuses on the well-being of the whole child, and it aims to reduce death and disability and illness in children under 5 years of age. The best thing about this is it uses a very easy color-coded chart. Green, yellow, and red. Red का मतलब आप सीधा उसको अस्पताल भेज दें. Green का मतलब you can treat him outpatient and easy, or actually treat him at home and just follow up. Yellow means you want to call him for frequent visits and then follow up with that. So very simple. And it does not stress the importance of जी आपकी diagnosis सही होगी तो बच्चा ठीक होगा. It stresses that you identify the problems on basis of history and physical examination and then treat accordingly. Whether or not your diagnosis जी ये bronchiolitis है या ये pneumonia है या ये viral pneumonia है, bacterial pneumonia, that is irrespective. Next slide. This is the main point I wanted to highlight here. This is a slide directly from the WHO. Undernutrition is an underlying cause of 53% of deaths among children under 5 years of age. This is how severe malnutrition is. वापस. Again, with out of all the children, this is the most recent slide between 2000 and 2003. Major causes of death among children under 5 years of age. Majority, pneumonia, malaria, measles, diarrhea, HIV. This is what IMCI covers. Pneumonia, malaria, measles, diarrhea, and HIV. And this is what your IMCI will target in order to get the maximum benefit. Baki majority neonatal deaths hain. And that is targeted at a different level. ठीक है? Next slide. Board मुझे ज़रा चाहिए होगा इस तरफ. हाँ जी. The last part of my talk, which will probably take another 5 or 10 minutes, is basically talking to you about nutritional counseling. ठीक है? How long breastfeeding should be done for how long? 2 years, okay? Exclusive breastfeeding should be for how long? 6 months. Exclusive breastfeeding for 6 months, ठीक है? And then you should start weaning foods. A lot of mothers complain immediately at the time, within the first couple of days, जी मेरा दूध नहीं उतरा, ठीक है? And that's why they don't breastfeed the child. Number one important thing to remember is पहले कुछ दिनों में दूध उतरेगा नहीं, because all you get is colostrum, ठीक है? And the amount of colostrum is very small. Another thing to keep in mind is babies usually do not need that much food in the first 1 or 2 days. All they need is that colostrum, which is rich in a lot of immunoglobulins, has a lot of energy, and is extremely important for the child. Okay? Second thing is, remember, a lot of times the reason why mothers stop breastfeeding is because of no encouragement. ठीक है? कोई गुड़ती दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कह रहा अच्छा अगर आपका दूध नहीं उतरा तो कुछ और दे दें,
ठीक है. And then remember another thing, there's something called nipple confusion. Nipple confusion क्या होता है? हम इंसानों की एक आदत है कि जो चीज़ हमें आसान लगती है ना, हम उसी तरफ चल पड़ते हैं. Remember, a baby breastfeeding needs a lot of energy to actually suck milk. Okay? Whereas in a feeder, okay, उसको उल्टा करो आराम से निकल आता है. ठीक है. So if once, and that's why we always recommend feeder ना दें. ठीक है. If you really want to breastfeed the child, spoon. Okay, feed the child. अगर आपको दूध नहीं उतर रहा या obviously social reasons के लिए आप कहीं निकली हुई हैं, ठीक है, आप नहीं वहाँ पे breast feed कर सकती, express your breast milk, okay, store it with you, and then feed the child with a spoon. ठीक है. A lot of mothers ask जी कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर करें, क्या करें. Remember, you can actually keep it in a fridge for 24 hours. It will not go bad. ठीक है. But once you heat it, you cannot reheat it after that. एक ही दफ़ा उसको गर्म करें, बार बार ना करें. गर्म करने का तरीका भी पानी को गर्म करें और गर्म पानी में उसको गर्म करें. ठीक है. डायरेक्टली हीट पे ना डालें. ठीक है. Second, you can actually also freeze. You can actually freeze breast milk, and that can be kept for about 3 days. And then you can take it out later and then again heat it slowly. Okay, so that's the initial part of nutritional counseling for children. For the first 6 months, you want to exclusively breastfeed. Next, after that, another is weaning foods. When do you start weaning foods? Usually at 6 months of age is when you want to start weaning foods. Okay, even with the weaning foods, you always want to start rice-based. Okay, not wheat-based immediately. You want to start with rice-based, yogurt, rice. It's like simple, and then gradually go on. Okay, you should not introduce proteins. जो meat proteins हो गए, अंडा हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, इस तरह की चीज़ें about until 7 months and onwards. ठीक है, because the child usually cannot. Regular milk, हम लोग कहते हैं fresh दूध कब इस्तेमाल करें? After 1 year of age, not before 1 year of age. ठीक है. And by 1 year of age, a child should be eating everything which we eat. कुछ बच्चे तो सालन भी खा लेते हैं, मिर्चों का कोई उनको पता नहीं लगता. ठीक है. But they should technically have a regular diet. More important than that is that they will, वो क्या करेंगे? They should have at least 5 meals a day. 3 regular meals and 2 snacks in between until 5 years of age. ठीक है. उनके खाने का तरीका ये होना चाहिए. Another important thing to remember is that with children, okay, कुछ बच्चे ठूंगे मारते हैं बीच बीच में, थोड़ा सा ये खा लिया, थोड़ा सा वो खा लिया, थोड़ा सा वो खा लिया, and then they really never sit down and have a real meal, okay, or never sit down and have an organized meal. So that's another important factor. नहीं, not 1 year तक. It should be at around 7 months or so. Whenever you start weaning foods, you international recommendation ऐसे कोई, I have not seen any such international recommendation. There may be something which he knows which I do not know, so I can't comment on that. As far as कहाँ पे था? Another important thing to remember is a child in his first year of age will triple his weight. अगर 3 किलो का पैदा हुआ है तो usually 1 साल में 9 किलो का हो जाता है. So he's going to eat accordingly. In the next year, he's only going to gain another 2 or 3 kilograms. So usually the amount appetite which the child has थोड़ा सा कम हो जाता है. ठीक है? But enough to sustain adequate growth. ठीक है? Simple things. Pepsi की